Hello friends, today we have started session number 3, chapter 3, Kingdom Plantae. Today we are studied the topic Pteridophyta, the third division Pteridophyta. So what is Pteridophyta? Pteridophyta are the vascular cryptogams. They are moist and shade loving plants. Pteridophyta are the first terrestrial habitat plants which are evolved in Paleozoic era, especially in late Paleozoic era. So once again I will repeat, what is Pteridophyta? Pteridophyta are the vascular cryptogams, and the pteridophytes are the first land habitat plants. They are moist and shade loving plants. They appear in the late Paleozoic era their habitat. The Pteridophyta are, some are aquatic, example Azolla, Marsilea, xerophytic Equisetum, and epiphytic Lycopodium. So once again I will repeat, Pteridophyta किसको बोलते हैं? Pteridophyta are the first vascular cryptogams. They are cryptogams. They are non-flowering, non-seeded plants. Their age is a late Paleozoic era. Late Paleozoic era में अपने planet पे Pteridophyta evolve हुए थे, first land plants. They are grow in a moist and shady places. टेरिडोफाइटा मोस्टली कहाँ पे ग्रो होते हैं? जहाँ पे मॉइस्ट है, शेड प्लेस है, वहाँ पे ग्रो होते हैं. तो उसकी हैबिट अलग है. मोस्ट ऑफ द दे आर टेरेस्ट्रियल, दे फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेड प्लेसेस, बट सम आर एक्वेटिक. अजोला है, मार्सिलिया, दे आर एक्वेटिक इन नेचर. इक्वेसिटम जीरोफाइटिक हैबिटेट, डेजर्ट में जहाँ पे मॉइस्ट और शेड पाया जाता है वो जीरोफाइटिक हैबिट में इक्वेसिटम ग्रो होता है. इपीफाइटिक जो प्लांट पे ग्रो होता है वो दीज आर द लाइकोपोडियम. So now in Pteridophyta, they are first vascular plant. The vascular tissues are xylem and phloem. Xylem consists of only tracheids, while phloem consists of only vessels. These xylem and phloems, the tracheids and vessels, are most primitive type of conducting tissue. So now in Pteridophyta, the sporophyte body differentiated into the true root, स्टेम एंड लीव्स. तो टेरिडोफाइटा में ट्रू रूट्स भी प्रेजेंट है, स्टेम भी प्रेजेंट है एंड लीव्स भी प्रेजेंट है. अभी लीव स्ट्रक्चर देखते हैं. लीव्स में बी स्मॉल माइक्रोफाइलस. आपको पहले डायग्राम देख सकते हैं. सेलेजिनेला में लीव्स कैसे एकदम माइक्रोफाइलस है, छोटे छोटे. दे आर पिनेटली कंपाउंड इन नेफ्रोलिपिस. सेकंड डायग्राम जो आपको दिख रहा है नेफ्रोलिपिस, जिसको फर्न्स बोलते हैं, दे आर पिनेटली कंपाउंड. वाइल इन इक्वेसिटम दे आर नीडल शेप. इक्वेसिटम जो प्लांट है, जो डेजर्ट हैबिटेट है, उसमें वो नीडल शेप पाया जाता है. सो दीज आर द लीव स्ट्रक्चर. वंस अगेन आई विल रिपीट. उसकी हैबिटेट कौन सी है? मोस्टली मॉइस्ट एंड शेडिंग प्लांट, बगट एक्वेटिक हैबिटेट में भी मिलते हैं अजोला. जीरोफाइटिक हैबिटेट डेजर्ट में भी मिलते हैं, मॉइस्ट और शेड प्लेस में. उसका इक्वेसिटम है. ओके और इपीफाइटी भी है, लाइकोपोडियम. उसके लीव्स कैसे? लीव्स आर स्केली. सेलिजिना में स्केली लीव्स आते हैं, छोटे छोटे. इन नेफ्रोलिपिस दे आर पिनेटली कंपाउंड, वाइल इन इक्वेसिटम दे आर नीडल शेप, दे शोइंग अ जीरोफाइटिक हैबिटेट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स फाउंड इन टेरिडोफाइटा. नेक्स्ट इन टेरिडोफाइटा द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन अ 2 stage, sporophytic and gamophytic. These are called as the alternation of generation. So life cycle completed in a 2 steps, gametophyte and sporophyte. Sporophyte body shows root, stem and leaves. आपको नीचे डायग्राम में दिख सकता है. These are the sporophyte body. इसमें leaves, stem सब है and they produce a sporangia. After sporangia release the spores. The spores grow to form a green prothallus structure called as a gametophyte. So these are called as a
alteration of generation, sporophyte and gametophyte. Sporophyte generation is a diploid in nature, gametophyte generation is a haploid in nature. So now sporangia produce a spores by the process of meiosis, and after germination they produce green color prothallus gametophyte. So for the pteridophyta, for the reproduction, they require water. Now the next one, gametophyte. The gametophyte bear, आपको डायग्राम में देख सकते हो, the heart shaped structure. These are called as a gametophyte. The gametophyte bear male and female reproductive organ. Male reproductive organ is called as a antheridium. आपको डायग्राम में देख सकते हो antheridium जो male reproductive organ है, and female reproductive organ is called as a archegonium. The antheridium, the male reproductive organ, release anthrozoids while archegonium release egg. So now the fertilization takes place to form a zygote, and from the zygote embryo is developed. From this embryo the sporophyte body is developed. Once again I will repeat, the 6 organ in the pteridophyta develop on the gametophyte. So the male reproductive organ is called as a antheridium while female is called as a archegonium. The male reproductive organ antheridium produce number of sperms, उसको anthrozoids बोलते हैं, which fertilize the egg cell to form a zygote. Zygote develop into the embryo. Embryo give rise to the sporophyte body, which showing root, stem and leaf structure. So ये वो आपका reproduction. So now in pteridophyta reproductions are vegetative, asexual and sexual type. रिप्रोडक्शन कैसा है, वेजिटेटिव भी है, असेक्सुअल भी है एंड सेक्सुअल टाइप. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ट्यूबर फॉर्मेशन, while asexual takes place by spores formation and sexual takes place by fusion of male and female gamete. So now the classification of pteridophytes. Pteridophyta classify into the 4 groups: Psilopsida, Lycopsida, Siphanopsida and Pteropsida. These are the 4 different classes of the pteridophytes. So now next one is the economic importance of the pteridophytes. So pteridophytes are medicinal purpose used. Some pteridophytes, they are used as a soil binder. Some variety grow in a ornamental plants. आप लोग जो गमले में प्लांट लगाते हैं, these are ornamental plants. So these are the economic importance of the pteridophytes. So once again I will repeat the pteridophytes. Pteridophytes are the first vascular cryptogams. They are called as a true plants. They are appear in a late Paleozoic era. They are moist and shade loving plant, but some plants are aquatic in nature, some are xerophytic, some are epiphytic. So they possess vascular tissue. Xylem consists of trachea, phloem consists of vessels. Okay, now plants sporophyte body consists of root, stem and leaves. All these are true. लीव्स कैसे है, स्मॉल भी है, माइक्रोफाइलस भी है और लार्ज बाइपिनेटली कंपाउंड है, नीडल शेप भी पाए जाते हैं. नाउ pteridophyta showing alteration of generation, sporophyte and gametophyte. So sporophyte generation is a diploid, gametophyte generation is a haploid. The gametophyte generation develop a male reproductive and female reproductive organs on their prothalli. The male is called as antheridium, female is called as the archegonium. The male gamete fertilized to the egg to form a zygote. From the zygote embryo is developed, and from the embryo the sporophyte body is developed. Okay, so now these are the 4 different classes: Psilopsida, Lycopsida, Siphanopsida and Pteropsida. All these are the 4 classes of the pteridophytes. So आपको मैंने आपको बताया pteridophyta are used some medicinal purpose, soil binder भी है और grow as a ornamental plant. So आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू, टेक केयर.